Hi ma'am, this is Meenu from Your Choice. Our store is in Kolkata. Outlet address 4/1 RBC Road, Calcutta 28. Now for this particular video ma'am, I will be showing Khadi tissue sarees, beautiful one with the hand embroidery done on these sarees. Price range of these sarees will be 2550, free shipping all over India. COD is not available. After you have made the payment ma'am, at the booking number 9831 903694, we will ship your parcel within 72 hours. Shipment slips are shared after 72 hours. Now just check ma'am, these are beautiful tissue sarees, absolutely gorgeous, and with the hand embroidery, the sarees are absolutely looking so very stunning. Just the simple border, the borders has kept very simple, at the same time they are very elegant ones. And just check ma'am, this is the buta design for the body section of the sarees, and you can see there is a dual triple shades. As you can see, nice copper and the brown and the golden shades are used for making the textile of this particular saree. Absolutely very much light-weighted, easy to carry, and please go for dry wash for these kind of sarees. So here is the nice pretty palla section of the saree. The blouse piece which is provided with the saree, I would suggest go for the stitching of the blouse piece. This is the blouse piece which is going to come in contrast with the body section of the saree. Price range ma'am 2550, free shipping all over India. So let me just make a rough pleats to make you understand how easy these sarees are to carry and drape. Although it's in a very rough way, I'm just doing it. Okay, so this is how it's very easy to make the pleats and to maintain the saree. It's not at all difficult. Okay, easy to carry and drape. A single you just see, this is how it is. It really sticks to my shoulder for the transparency, because many of you are, so this is the transparency of the saree. Okay, this is not actually very transparent saree or any see-through kind of saree. The blouse piece which is provided with this particular saree will make the coverage. Next color for the same, it's going to be in the shade of grey, absolutely cement color, sorry, this is actually cement color. So just check ma'am, this is how the beautiful cement color it's available for this particular saree with this kind of borders. And here comes the archal portion. This is a beautiful archal, beautiful. Just see, different kinds of hand embroidery it is done on this particular archal section. And for the body portion, this is the buta design for the body section of the saree. The blouse piece which is provided with the saree, also for the sleeve ma'am, the butas are just on the each of the sleeve you can add single buta on the blouse piece. The blouse piece is in a darker shade than the body color, and just check like this way, in contrast color combination, like two different, a lighter shade of cement and the darker shade of cement is provided for the saree. Now very pretty mehendi green color. Again for the green, there's a mehendi green and the golden shade. Just check. Okay, so here is the mehendi green color. Again for mehendi green, same kind of buta design it is provided on the body section. The borders are just kept very simple, and the palla section of the saree is like this way. This is the palla section of the saree. And for the blouse piece, a darker shade of mehendi green is used for the blouse piece. Price range, again I repeat, 2550, free shipping all over India. Now next is what should I say, what kind of color it is? It's of golden and rama green kind of shade. So again a dual shade is provided. Just check very nicely from the near to the camera. Now this is the buta design for this particular saree on all over the body section. For the archal section, this comes the archal section of the saree. The blouse piece will be in a darker shade. So this is the blouse piece. Price range, once again I repeat, 2550, free shipping all over India.
Next, one more is the golden by golden. Okay, the golden by golden, beautiful golden by golden. It is absolutely very stunning. Believe me, these kind of, it look very simple, but definitely they are very rich. You can definitely use for parties, absolutely for, and especially this golden color is just looking so very nice. मेरे को ये अच्छा लगा, बहुत सुंदर है. अच्छा, this is the ma'am butta colors for the golden shade of the sari. The borders are kept very simple. Here is the archal portion of the sari. For this particular sari, either you can go for the stitching of the blouse, or either you can go for any contrast color heavy blouses. If like let the sari be very simple, you can also use some heavy blouses, especially if you are wearing these saris at any particular parties. So different kind of blouses can you can experiment with this particular sari to create different kind of looks at the different events. Okay, so this is all up to you, how rich you want to make your look according to the occasion. So this is the palla section of the sari and the blouse piece, and this golden, actually the golden blouse piece is really going to work with some other saris also. Okay, although you can definitely go for the stitching of the same, but but try to make the experiment with different kinds of blouses for the same sari. Okay, chalo. Next ma'am, next I'm going to show same fabric, same textile, but we will have a different kind of floral print. It's done, it's a digital floral print it is done, and we will see how the sari is going to come. Look at this, the sari is going to come in a progressive way. As we progress towards the archal, the work is going to increase more and more. Take care. Let me just show you now. For this one, just check, this is a, what should I say, this is an shade of ivory with gray and the golden, ivory gray golden. Look at this. First let me just show you this is ivory gray and golden, and here is the beautiful, just see the colors, beautiful colors, absolutely very stunning saris. These are, you will really feel the soothing effect of the colors on your mind, on your psychologically. These kind of colors really enhance, they really give us a very soothing, healing effect on our mind. Look at this one, just check the color shades which are provided on the sari, and the sari is looking so very stunning, so very simple, and this, but absolutely very rich kind of sari it is. And for the palla, this is the whole palla section of the sari. You can also go for the stitching of your dresses with this kind of the tissue linen kind of fabric. Now the blouse piece which is provided with the sari is also very rich. Just see ma'am, this is the body section of the blouse piece. Okay, and for the sleeves, this is the portion for the sleeves. Go for the stitching of the same blouse. I would recommend, if you're wearing it as a sari, definitely that's really going to enhance the whole look. Absolutely very pretty. Price range is only nominal, that's 2550, free shipping all over India. Now just see, this is a beautiful shade, very soothing shades. These are absolutely very soothing, very soothing. You will be very happy to get these saris. So just check ma'am, this is how it is, a very pretty one. This is really giving, at least when I open the sari, the kind of feeling it's giving to me, it's really very happening and happy and healing feeling. Okay, it's really very pretty one. Just check ma'am, this is how the lower skirt border it will be. Let me make a pleat and show you roughly. And the tissue fabric, it's quite nice. It's really very गफरा हुआ कहते हैं ना, गफरा हुआ, हम हिंदी में इसे कहते हैं गफरा हुआ है कपड़ा,
काफ़ी गफरा हुआ है, एकदम पतला पतला सा नहीं है, तो बहुत सुंदर लगेगी ये साड़ी। जस्ट चेक मैम, ठीक है, ये देखिए, ये इसका स्कर्ट बॉर्डर इस तरफ से आएगा और ये इसका आंचल सेक्शन है, ब्यूटीफुल आंचल सेक्शन, ठीक है, ब्यूटीफुल, जस्ट वर्ड ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, प्रिटी, all these words I just can use to describe this sari, because this is really making the justice for this particular sari. Absolutely mind blowing. That's really very simple, but see the how the beautiful happiness is just glowing on these saris. Price range is again ma'am 2550, free shipping all over India. Next color option for the same sari. Wow, absolutely very pretty. This green color is much more prettier. What you can see on the camera is much more prettier. What you can see on the camera is not doing the justice with the green color for the sari. Okay, and green is always the color for healing. Okay, now when we visit to the doctor's chamber or the hospitals, you see the green color curtains are used because they are the symbol. The green is the symbol of healing. And this is really giving me the exactly that particular feeling of the feeling of healing and happiness is just reflecting so very nicely with this kind of saris. And everybody, everyone we love to receive beautiful flowers, you know, on the different occasions. Maybe it's birthday or it's anniversary. So on very special occasions we love to have some flowers. So those kind of flowers, those kind of happiness, the happiness which when we the happiness which we experience when we get those kind of bouquets on that particular occasion. So that is the exact kind of feeling right now I am experiencing while I open the sari and show you. So this is how the beautiful color it is. The camera is not doing the justice for this green color. Absolutely very eye soothing, a very new good green color it is. And just check ma'am, this is how the palla section of the sari is, and the blouse piece will be again same ma'am. The blouse piece is there is a work which is done on each of these blouses. So just check this is the body portion of the blouse piece ma'am, and the work this is going to be on the sleeves. Okay. Next ma'am, next look at this beautiful shade of powder blue with golden. Absolutely pretty, very pretty golden and the powder blue. कौनटा ले कौनटा छेड़, कौन सा ले और कौन सा छोड़े, मतलब ये डिसीजन थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है. हाँ, क्योंकि हरी कलर इतने खूबसूरत से है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है कि कौन सा कलर ले या नहीं ले. तो आप बिल्कुल जो डिसीजन तुरंत नहीं ले पाएंगे, मैं आपसे कहती हूँ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अपने में पहले डिसीजन लीजिए कि कौन सा कलर आपको चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए. जब बिल्कुल आप फिक्स हो जाओ ना, मुझे यही चाहिए, तो फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज दिस इज़ हाउ द पल्ला सेक्शन. ये वाला पल्ला सेक्शन है और बहुत ही खूबसूरती से ये वाला ब्लू ना बहुत ही सुंदर सा ब्लू है, और इसके साथ ये जो ब्लू, टर्कोइश ब्लू और ग्रे और ग्रीन ये सब कलर बहुत ही एक्वा कलर होते हैं ना, वो वैसे वाले कलर कॉम्बिनेशंस इसमें दिए गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है. ठीक है, ये साड़ीज़ तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मुझे तो बेहद खूबसूरत लग रही है. आप भी बताएं आपको कैसी लग रही हैं ये साड़ीज़. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हैप्पीनेस और हीलिंग को लेके अगर आप कुछ कमेंट कर सके हो, पॉजिटिव कुछ कमेंट कर सके हो तो ज़रूर करें, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ द साड़ी इज़. दिस कम्स द आंचल. ब्लाउज़ पीस भी काम किया है, इस ब्लाउज़ पीस पर भी बेहद सुंदर सा काम है मैम. बॉडी सेक्शन पर देख सकते हो, इसका ब्लाउज़ पीस पर इस तरह का काम किया गया है, और ये वाला इसका बॉडी स्लीव्स है. ठीक है, स्लीव्स पर भी इस तरह का जो है वो काम है. और ये वाला जो धागा देख रहे हो आप, ऐसे लगता है ये पिटाई वर्क किया गया है, बहुत सुंदर सा है. साड़ी जब मिलेगी आपको आप तो
जैसे बोलते हैं ना तबीयत खुश हो जाना, तो वैसी वाली ना तबीयत ना आपकी खुश हो जाएगी। ये बहुत सुंदर साड़ी है। अच्छा रूमा दिखाओ बेटा। नेक्स्ट कलर जो है वो गोल्डन शेड पर है, ठीक है, गोल्डन पर की गई है साड़ी। देखिए ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी को लेके प्लीज़ फिक्र ना करें, क्योंकि जब आप इसके साथ ब्लाउज़ दिया गया है वो उसे स्टिच कराएंगे ना, तो वो ट्रांसपेरेंसी वाला जो हमें जो मैटर है वो बिल्कुल छुप जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं एक सिंगल फोल्ड में आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी है, पर इसके साथ जो ब्लाउज़ है वो साड़ी की जो बॉर्डर का कलर है ना उससे एक शेड डार्कर है। तो जब हम इस सेम ब्लाउज़ को जब पहनेंगे इस साड़ी के नीचे, तो वो जो ट्रांसपेरेंसी वाला मैटर है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये साड़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो डाउट मत रखना कि क्या, क्योंकि कई बार होता है ना हम बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो इससे हम सोचते हैं साड़ी तो बहुत सुंदर है पर शायद ट्रांसपेरेंट है, पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ कबर्ड में मत रखे, ली है तो पहने, ठीक है। तो क्योंकि जो भी चीज़ हम लेते हैं पर उसे पहनते नहीं है, उसे यूज़ नहीं करते, वो एनर्जी बहुत स्टक एनर्जी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। एनर्जी का जो फ्लो है वो बने रहना चाहिए। तो जो आपको लगता है कि जो कपड़े आपको नहीं भी चाहिए, या तो आप अपने वार्डरोब से हटा दीजिए, और जो लिए हैं जो वार्डरोब में है प्लीज़ या तो उसे यूज़ करें या तो उन्हें दे दें, ठीक है। तो ये देखें मैम, दिस इज़ हाउ द ब्यूटिफुल वर्क इट इज़ डन ऑन द लोअर सेक्शन ऑफ द साड़ी। इस तरह से एक रफ प्लीट होती है ना, रफ प्लीट करके भी इन साड़ी को पहनोगे तो बहुत सुंदर लगेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि खुले पल्ले की ही डालनी है, आप बिल्कुल बस ऐसी एक बड़ा वाला प्लीट लेके डालोगे ना तो भी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत एक रफ प्लीट लेके डालो तो साड़ी बहुत सुंदर लगेगी, ठीक है। गोल्डन, और ये गोल्डन का शेड है तो बहुत ही रिच है, हालांकि इसके सारे ही शेड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये तो बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता लग रहा है ना, जैसे हमारा बर्थडे या एनिवर्सरी होती है उस वक्त हमें बहुत सुंदर सुंदर से फ्लावर के गुलदस्ते मिलते हैं तो हमारी तबीयत कितनी खुश हो जाती है ना। बिल्कुल वैसी वाली वैसा ही मुझे फीलिंग आ रही है जब मैं ये साड़ीज़ को आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इसका आंचल है और ब्लाउज़ में भी काम किया है। ब्लाउज़ पीस भी बहुत खूबसूरत सा है, बेहद ही खूबसूरत सा, हसीन है, एकदम हसीन, ठीक है, ठीक है। दिस इज़, कभी वक्त मिलेगा तो मैं कभी एक वीडियो में सुंदर, खूबसूरत और हसीन का डिफरेंस ज़रूर मतलब व्यक्त करने की कोशिश करूँगी, पर इस वीडियो पर नहीं, काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दीज साड़ीज़।